बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लेक्चर नंबर 65 तक हम पहुंच चुके हैं। इससे प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं वो आप 1 बाय 1 देखें, यार एक ऊपर नंबर लिखा हुआ है। इसके ऊपर जो बच्चे नोट्स मंगवा चुके हैं नोट्स को पढ़ें, जिन्होंने मंगवाने मेरे नंबर पर रब्ता कर लें ताकि नोट्स आप तक पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह इन नोट्स से आप जो टेस्ट है बआसानी क्लियर कर जाएंगे। और जो बच्चे एकेडमी आना चाहते हैं ईद के बाद आप मेरे पास तशरीफ़ ले आइएगा, नंबर पर रब्ता करके आप मालूमात एकेडमी की ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ग्रुप का हिस्सा हैं अपने दोस्तों को ग्रुप में लगातार ऐड करते रहें। चलते हैं आज के क्वेश्चंस और इनके आंसर्स की जानिब। द अरेबियन पेनिनसुला लाइज इन, द आंसर इज़ मिडल ईस्ट। नेक्स्ट है द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द ईयर 571 AD, 571 ईस्वी। The name of the Christian chief who invaded Mecca in 570 AD was? The answer is Abraha. The name of the country to which the Holy Prophet Muhammad peace be upon him accompanied his uncle Abu Talib was? The answer is Syria. When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was of 25 years of age, he married a widow whose name was? The answer is Hazrat Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. The first revelation was sent down to the Holy Prophet, peace be upon him, in Ghar Hira. The Holy Quran was first revealed to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in the month of Ramadan. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received his first wahi when he was 40 years old. Safa and Marwa are the names of two dash. Safa and Marwa are the names of two mountains. The first woman who embraced Islam was? The answer is Hazrat Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Among the males, dash was the first to embrace Islam. The answer is Hazrat Ali radhiyallahu anhu. The first migration of the Muslims was to the country of? The answer is Abyssinia. The prolonged hostility of the Quraysh of Mecca forced the Prophet Muhammad peace be upon him to migrate to the city of Dash, to the city of Yasrib. The first hijrah to Ethiopia was made in the year dash of the prophethood. The answer is 5th. The Charter of Medina is regarded as the dash written constitution of the world. First. Next question. The first Muslims who was introduced to call the faithful for prayer through azan was? The answer is Hazrat Bilal Habshi radhiyallahu anhu. The Battle of Badr was fought between the Quraysh and Muslims in 624 AD. The Battle of Uhud was fought in? The answer is 625 AD. The battle in which the Muslims dug out a ditch around Medina is known as the Battle of Khandaq. In the Battle of Khandaq, the commander of the Quraysh was? The answer is Abu Sufyan. The Treaty of Hudaybiyah was signed between the Quraysh of Mecca and the Muslims in the year? The answer is 628 AD. The conquest of Mecca took place in the year? The answer is 630 AD. The last campaign
which was undertaken by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was that of? The answer is Tabuk. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died in the year of the Hijrah, 10th year of the Hijrah. Dash succeeded in the Holy Prophet, peace be upon him, in the year 632 AD. Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu sent the first Muslim army under Dash, under Usama bin Zaid Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Surah Al-Nas is the Dash. Surah Al-Nas is the last. Iran was conquered in the time of Dash. Iran was conquered in the time of Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. There are Dash surahs in the Holy Quran. There are 114 surahs in the Holy Quran. The Holy Quran is divided into Dash paras. The answer is 30. The Holy Prophet, peace be upon him, has once ordered Dash to lead the prayers while he was sick. The answer is Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. The rate of zakat is dash percent. The rate of zakat is 2.5%. The Meccans made a social boycott of the Muslims in the year dash of prophethood. The answer is 7th. After the death of Sayyida Khadija Radhiyallahu Anha in Makkah, the Prophet, peace be upon him, took Hazrat Dash as his second wife. The answer is Hazrat Sauda Radhiyallahu Anha. The longest surah in the Holy Quran is Surah Al-Baqarah. The largest number of hadiths were reported by Dash. The answer is Hazrat Abu Huraira Radhiyallahu Anhu. बच्चे ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट करवा रहा हूँ, ये आप लिखते रहा करें, याद करते रहें, नोट्स वगैरह पढ़ते रहें। मेरे जिन बच्चों ने नहीं मंगवाए नोट्स वही मंगवाएं। अभी कुछ उर्दू में मैं आपको डिक्टेट करवाऊँगा। मशहूर किताब अल फारूक के आथर कौन है? इसका आंसर है हज़रत मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा का नाम बताइए। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को जब शहीद किया गया उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? आंसर है 63 साल। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डाइज़ इन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब आपकी वफ़ात हुई? 13 हिजरी में। मशहूर किताब है नहजुल बलागा। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सरमन्स हैं और ये किन के हैं? इसका आंसर है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कम आबादी वाला बर आज़म कौन सा है? जी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी बर्फ़ इतनी ज़्यादा कि आबादी है ही नहीं इंसानी। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया की पहली कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च की गई? इसका बेटा आंसर है 1965 में। वो कौन सा एरिया है ज़मीन पे जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है? इसका आंसर है साउथ पोल। सबसे गहरी झील दुनिया की कौन सी है? बाइकल नाम है इसका, लेक बाइकल। ये बताएं बच्चे कि विच इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा बिजी सी पोर्ट कौन सी है? इसका आंसर है सिंगापुर सी पोर्ट। याद रखिएगा सिंगापुर। कुछ ना कुछ तो सीखते हैं हर वीडियो में, तो वीडियो को आप देखते रहें। सुबह 10 बजे इस चैनल पे डेली बेस पे लेक्चर अपलोड किया जाता है और रात को सक्सेसफुल लाइफ पे लेक्चर अपलोड किया जाता है। दोनों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर मैं ग्रुप में शेयर करना भूल जाऊँ
तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाया करेगा जी। नेक्स्ट है, फर्स्ट टेलीग्राफ साइन वाज ट्रांसमिटेड इन 1901। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? अमेरिका है। सबसे ज़्यादा जो ज़बान बोली जाती है दुनिया में वो कौन सी ज़बान है? चाइनीज़। आबादी चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उर्दू का नंबर चौथे नंबर पे आता है। बिगेस्ट दुनिया की जो लाइब्रेरी है उसका नाम बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये थे आज के क्वेश्चंस और रात को इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, वो भी आप देखें। रेगुलर बेस पे लेक्चर आप सुनते रहें और नोट्स अलग से पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ पास होगा। लास्ट में मिल के आइए दुरूशी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। जो बच्चे ग्रुप का हिस्सा हैं अपने दोस्तों को ग्रुप में ऐड प्लस पे क्लिक करके ऐड करते रहें। जो ग्रुप का हिस्सा नहीं है मेरे नंबर पे आप रब्ता करें, जो नंबर सामने शो हो रहा है, ताकि आपको ग्रुप में हम शामिल करें। ग्रुप का लिंक सेंड किया जाएगा, आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा 5 लिंक्स होंगे, 5 पे आपने क्लिक करना है। बेस्ट ऑफ लक। अभी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।